की करेंगे क्योंकि काफी सारी हेडलाइंस यहां से निकलती हुई नजर आई हैं। आईवीपीए के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई हमारे साथ हैं। सुधाकर जी नमस्कार। आप लेते हैं सोना चांदी? नमस्ते जी। नॉट मच। तो ये चिराग को सुनना चाहिए था कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर नहीं है शायद अभी भी सोना चांदी में। बट दैट ऑन अ लाइटर नोट, खाने के तेलों की जहां तक we are dealing in liquid gold, which is edible. एब्सोल्युटली सुधाकर जी, टाइम और ये नहीं है। लिक्विड गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है बाय द वे इन सेंस ऑफ प्राइसेस एज वेल। सिंस वी आर टॉकिंग प्राइसेस तो पहले वही एक व्यू जान लेते हैं। एंड कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा बहुत सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है, इंडियन मार्केट्स में हमने इम्पोर्ट्स में कुछ गिरावट जून के महीने में आते हुए देखी है। किस तरह से आप ये पूरा डायनामिक्स रीड कर रहे हैं? No, the markets have achieved a stability right now. All the uncertainties, थोड़ा geopolitical tension की वजह से थोड़ा बहुत तेजी के कारण बन रहा था. But now the market is in a stabilized area. Palm oil is back in the game because it is about $100 cheaper. Soya has rallied because of the global US biofuel mandate support by President Trump. And sun oil, of course, we are dealing with the old crop. The new crop will come only in October. As far as the Indian situation is concerned, primarily we see a big drop in April, May, June in terms of imports. But there is a different way of seeing it. If you see October to March, actually imports were plus about 6 lakh tons. But if you see Jan to June this year compared to previous year, there is a 9 lakh tons of reduction. So there are various reasons for it. One is definitely the price rally that has happened before the duty correction, before the duty went down. I think the prices were a little bit prohibitive. And then we had the government call on the by Honorable Prime Minister for reduction of edible oil consumption. Palm oil was very expensive, so people were trying to find out alternative oils. Destocking by the trade was very huge because of the fear of Nepal imports, zero duty imports. And also the market was inverted. So it was not in favor of building up stocks. What I mean is, you will find that every month aage ka tel was sasta than compared to what he could buy, compared relative to nearby. So there was no incentive for anybody to stock. So all these factors are there. Fear of duty cut was there. But now, if I look at the June numbers, which you mentioned, June at 14 lakh tons of imports is something like a rebound, which means that we are entering July, August, September, which are the peak festival months. So import demand will be good and prices are consolidated and stable. One redeeming feature which sticks out is that despite all other environment, for some reason of stock fear or a lower crop, the mustard prices have been leading the pack in terms of rally in India. Of course, it is related to the government destocking. If they release stock aggressively, then the mustard prices can ease off. Otherwise, policy front and also the consumer front and the farmer front, global price, it's all consolidated and stable right now. ओके सुधाकर जी, आपने मेंशन किया किस तरह से प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कम खाने का तेल खाने की हिदायत दी है। उसके बाद हमने हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर आते हुए देखी हैं। ऑफ कोर्स पिछले 2 दिनों में हमने कंज्यूमर सेंट्रिक तरीके से यहाँ पर काफ़ी बातचीत की है, कंपैरिजंस भी किए हैं कि इंडिया का कंजम्पशन क्या है, बाकी देशों की कंजम्पशन क्या है और क्यों इंडिया में हम इतनी ओबेसिटी वगैरह आता हुआ देख रहे हैं। दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। लेकिन इन सब के चलते, और हम मानते हैं कि ओवरनाइट यहाँ पर कोई ईटिंग पैटर्न्स में फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, लेकिन अगर बार बार आप इसे हैमर करते रहें कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, शायद एक इम्पैक्ट पड़े। इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ ये सारी कॉन्वर्सेशन या डेवलपमेंट को कैसे देख रही है? कि थोड़ा सा देखिए, हमने देखा है कि there can be a quick reaction also from the consumers for all these campaigns. But I'm actually good that instead of Instagram, instead of WhatsApp University का जो dialogue है या miscommunication है फूड सेक्टर में, उससे तो अच्छा यही है कि गवर्नमेंट रिसर्च्ड data and communication आ जाए, even for non-branded that they are talking,
कि ऑयल और शुगर का डिक्लेरेशन होना चाहिए टुवर्ड्स हेल्दियर ऑप्शंस। इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटी है टू कम आउट विद द राइट प्रोडक्ट्स। ओके, कंज्यूमर विल डिसाइड when this has to happen, this shift has to happen. This can have far-reaching impacts in the long run because उसके हिसाब से acreage भी shift हो जाएगा. Actually speaking, suppose you say too much sugar is bad, then it has to get converted to some other sector. So consumer is very, very important to decide what industry does in terms of its products and supply chain, and also the what is grown also. So these changes are good towards healthier because in India, as you know, as much as undernourishment is a problem that they say, but there is actually a 60 to 70 million population which is overweight, obese, and you also heard about thin fat Indian. I mean, they appear to be thin, but then you have inside the fats that are I think the accumulating. So buzzword towards is healthy fitness. India. Being fit and Fitness, being yes. healthy is I think the buzzword. सुधाकर जी, एक और चीज़ यहाँ पर है, क्रिसिल की रिपोर्ट आई थी कल जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से खाने के तेल के प्राइसेस में हमने गिरावट आते हुए देखी है, उसके चलते रिफाइनर्स के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें 2 से 3% की गिरावट इस साल में बनते हुए नजर आ सकती है। अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन आप कैसे देखते हैं एक ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री? No, see, the edible oil industry is very competitive. If you see any global or Indian balance sheet, they operate at 3 to 4% margin at a pre-tax level. So I think the industry cannot digest too much profits. So it has to be competitive, like a commodity. But I'm happy that with the recent duty changes, actually influx of refined oils has come down. Which was affecting the domestic industry in a very bad way, and also the impact of zero duty imports from Nepal still continues. That is still a problem to be resolved. But otherwise, I think industry will operate at optimal margins. वेरी क्विकली सुधाकर जी, एक फाइनल चीज़, आपको लगता है खाने के तेलों के प्राइसेस आगे जाकर और गिर सकते हैं या फिर आपको लगता है एक कंसोलिडेशन बनेगा अब? I think it will be stable unless the biofuel sector is the only risk factor for the any potential consolidation of rally. Because as you know, U.S. biodiesel policy, which can take 6-7 million tons of oil, soybean oil away from food sector, is very, very important factor. But barring that, it does look like U.S. is going to continue the biofuel policy. On the other front, on the consumption, you see, I was hearing your interview only, that sugar and edible oil is at 19 kilos. So it's an average. So there is a large population who consume about 10 or less. And there is a large population who consume 24, 25 kilos. So I don't think that overall year-on-year demand is going to be lower or something. I think overall average consumption per capita, if you see, as the GDP grows, the consumption at a different segment, that is the lower segment, or even rural, I would say, the consumption should grow. So year on year, you will continue to see 2 to 3% increase. It might get plateaued somewhere around 24 kilos if we compare with the neighboring Asian countries. Obviously, you cannot compare uncomparables like US edible oil demand or Europe. Yeah. एब्सोल्युटली। सुधाकर जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और काफ़ी सारे मुद्दों पे आज हमसे यहाँ पर बात भी करने के लिए। वो सुधाकर देसाई हैं, IVP के प्रेसिडेंट, हमें बताते हुए कि प्राइसेस में कंसोलिडेशन है लेकिन डिमांड यहाँ पर काफ़ी स्टेबल बनती हुई नजर आ रही है।